explain how to use ADRSET functions I used in the logics. So let's start the video. First of all, I want to explain how to the ADRSET functions. Basically, ADRSET functions move the data directly. How so? First of all, मैं इसको disable कर दे रहा हूँ like box में, and here you can understand like in this first D4 is like first scans like given PLC run modes, then the automatically D4's 1 2 3 4 value transfer in D4's. After that, when M0 is turned on, then W100's values and B100 values. Here below side you can see like D4 value will be transferred in D100. D100 value will be transfer in W100, and W100 is the real value, not D100s. So let's start the online simulations. First of all, I'm going to enable this bit. When I enable this bit, after 2 seconds, the value will be automatically removed. Like here you can see like D100 value is a random values, like garbage value 60, any random values. But here below D4, in D4 1 2 3 4 moves, and this value will be transferred like 1 W100. Here, if you want to use like W100 registers, so easily you can use W100, not D100. Suppose I'm going to change the D4. Simply you can see like not this. This value will be reflected. So basically add the set हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पर हमें वैल्यू को मूव यूज करना है. एड द रेट मीन्स हमें भले सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए कुछ और दिखाना, बट हमें इंटरनली यूज कुछ और करना है, तो वहाँ पर हम एड द सेट यूज करते हैं. बेसिकली यहाँ पर अभी हमने मेन हमारे पास हो गया D4 एंड W. अगर हमने यहाँ पर एड द सेट लगा दिया, एड द सेट मतलब वो इनडायरेक्ट वैल्यू को मूव करेगा. जहाँ पर हमारे पास D100 है उसके जस्ट सोर्स के डी रजिस्टर पर. Okay guys, thank you.